ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्यैव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुस्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। हरि ओम हरि ओम। यथा दृष्टि तथा वृत्ति, यथा वृत्ति तथा कर्म, यथा कर्म तथा एव सुख दुखे भवति. So as is the vision, so is the thought. As is the thought, so is the action, and as is the action, so is the joy and sorrow experienced. And never mix two drishtis, two visions we should not mix. Sometimes they mix the two vision, that if only one Brahman is there, who is worshipping whom? Don't mix bhakti and Vedanta, vision as a sadhana. Parabhakti is same as Vedanta, but as a sadhana both are different. So here in this particular section, the topic is from the worldly people's angle. This is Jagat Drishti is there. One is Jagat Drishti, then one is Ishwar Drishti, one is Atma Santosh Drishti, and one is Atma Gyan Drishti. So from Jagat Drishti, lot of things are important. If you meet somebody, he will say, how is your family? Where you live? Who's your father? Are you married, non-married? For Jagat Drishti, these things are very important. From the Drishti of the Ishwar, these things are not that important. From the Drishti of Antaryami, these things are almost negligible. And from Atma Drishti, all is mithya other than self. So here, Bhartruhariji is bringing Jagat Drishti regarding the matter of wealth, regarding money matter. And we cannot totally bypass Jagat Drishti, because generally what we think about ourselves is after hearing what others think about myself. So self-image is made many times by what people are thinking about me. If you know that people don't like me because of my nature, so you will have a bad self-image also.
And if you know people like me because of my nature, then your self-image also will be good. So it is not very wise to say that I don't care for anybody. Jagat Drishti is a reflection somewhere of something else also. So, about the money, Jagat Drishti is very important. And and of course, we have not called, scriptures have not called money. They have used the word Lakshmi. So when you say he has lot of Lakshmi, one bhav comes. And when you say he has lot of money, another bhav comes. When you say Lakshmi Ma, so that means the money is seen as a reverential thing, not for enjoying. And when you say I have money, so it is indicating indulgence and enjoyment also. So therefore Lakshmi, 3 days in Navaratri is Lakshmi Puja, 3 days Saraswati Puja, and 3 days Durga Puja. So Saraswati Puja is for knowledge, Lakshmi Puja is for prosperity and wealth, and Durga Puja is for health. So that your health is good, emotional and physical health also. But outer situation wise prosperity is because of Lakshmi Puja. The prosperity of knowledge is because of Saraswati Puja. And the prosperity of my bodily emotions, body and emotion is because of Durga Puja. So three days are dedicated to that Devi. So here you can say he's saying in a fact, and also there is certain sarcasm which is hidden in Bhartruhari's style. Bhartruhari is very good in sarcastic remarks. And second person who's good in sarcastic remarks, tell me. Vidyaranya Swami. Vidyaranya Swami is master in setting sarcasm. So here he says certain things which you have to note. It is Jagat Drishtya he is saying. न तो आत्मदृष्टया, न तो ईश्वर दृष्टया, न तो अंतर्यामी दृष्टया, और न तो आत्मसंतोष दृष्टया. अंतर्यामी दृष्टि आत्मसंतोष इज वन थिंग. आत्मसंतोष दृष्टया से नहीं बोल रहे हैं. नादर ही इज टॉकिंग फ्रॉम माया दृष्टि, नादर ही इज टॉकिंग फॉर आत्मज्ञान दृष्टि, नादर ही इज टॉकिंग फ्रॉम द दृष्टि ऑफ ईश्वर. He is talking from the vision of a layman, ordinary person who is not having dispassion, neither he has devotion. Understood? No? So see from which angle he has said that. What are the worldly ways? So 39 verse. Let us read. Jatiryaturasatalam gunganaihi तत्राप्यधो गम्यताम् शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः सन्दैयतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपततु अर्थोस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलव. गुणास्तृणलव प्रायाः समस्ता इमे. So he says, ये नैक विना guna, all the qualities
become like grass. Ah, Trina lava praya. Trina lava means blade, small blade of grass, all big, big qualities without money. How? I'll see that. Here, money means opportunity to express in outer world. Jatir yatu rasatala. I told you this is Jagat Drishtya. I'm repeating it. I may be of a bigger jati. Let it go to Rasatal. Because I don't have any money, so I cannot, a Brahmin cannot study also. Or I don't have opportunity to go to the city. Many people are very poor, but they are from high caste. They are remote villages there. Ab, they cannot go to some tutor or some school because they don't have that much of money. उनकी अपॉर्चुनिटी तो गई. In life, if you don't have, you may have talent. But if talent doesn't get a road called opportunity, then talent will not be shining. It is not expressed in front of everybody. Like you have very good car, but terrain is not there. There is no road to drive the car. Many people may have lot of goodnesses, but they have no opportunity to express anywhere. Here, that because he doesn't have that dhan, so jatir yatu rasatalam. God has not given, God has given him a very poor family. Or God has given him a very remote village where even train doesn't go. He is from a high class Brahmin or whatever is there. बेचारे के पास है नहीं, he has to see the house also. So he may be brilliant, but it is non-expressive. He won't know. ये ऐसा बहुत जगह होता है. जातिर यातु रसातलम सिमिलहि गुण गणहि तत्र अपि अधा गम्यता. Gun Ganai means lot of qualities may be there. Many singers are there, many dancers. Nobody knows them. Nobody, because they cannot give on the internet. They can't open their own YouTube. They cannot have their own Facebook. या और they don't have a contact. धन नहीं है तो उनके पास कुछ है ही नहीं. फिर कोई उनको मौका ही नहीं हुआ. आप अकेले में गाओ, जंगल में नाचे मोर. The peacock is dancing in the jungle. This is all Jagat Drishtya. If Ishwar Drishtya is there, no problem. You can sing alone, doesn't matter. Then you are like Shabri or you are like Meera, no problem. But from the worldly person's angle, you are non-noticeable. You have, because you don't have that prarabdha of money or opportunity. Therefore, you are as if non-existent, extinct as if. बहुत से लोग हैं उनके पास नहीं. Karn had lot of talent, but opportunity was not there. Because he didn't have the wealth of being born in the royal class. Therefore, Dronacharya refused to even teach him. Same thing happened with Eklavya, but Dronacharya went few steps ahead. He took away the thumb also of Eklavya. If he was from royal clan, then he had another story. So many times a person, because he doesn't have, his world doesn't give him the place what he should have got it. Sheelam Shaila Tatat Patatu. Let the shield, very nice conduct, be thrown in the Shaila Tatat means on the side of the mountain. अब शील होगा आपके पास, कोई जानते नहीं आपके शील को. Therefore, Lakshman ji said that, Vishwamitra ji rather, that Ram ji should go to Janakpur, he should get some bigger stage, people should know him.
his shield, his bal, he should be put on the bigger canvas. होगा शील, क्योंकि उसको इसके पास है नहीं कि वो सब जगह एक्सप्रेस कर सके. देखो एक अपॉर्चुनिटी की इतनी वैल्यू हो जाती है. धन, अपॉर्चुनिटी, कोइंसिडेंस तो नहीं होता, प्रारब्ध, बहुत सी चीजें ऐसी होती नहीं है. कितने लोग अच्छा गाते हैं. समटाइम यू सी अ रिक्शा पुलर इज सिंगिंग वेरी नाइसली. कोई रिक्शा वाला बहुत अच्छा करने लगा, उसको कौन जानेगा. अभिजनः संदय्यताम मन्निना. अभिजनः, you are from a very big family, you are coming. Let it go to fire. Why? Because you don't have anything to express. होगी कोई बड़ी फैमिली, लेकिन आपका तो है नहीं. Because you have no money to express. शौर्ये वैरिणी वज्रमाशु. शौर्ये. So, valor is there, somebody has. Valor. Bravery is there. Huh? So, let it be destroyed by the mace. ये लिखा हुआ है. शौर्ये वैरिणी वज्रमाशु. उसको वज्र से खत्म ही कर दो. मिल गया ना. इट इज स्मिटन बाय थंडर बोल्ट. कुछ नहीं है. शौर्य कहाँ डालोगे अपना. शौर्य के लिए आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, देन यू कैन बी किंग, और यू हैव टू हैव शो समथिंग, तब यू विल गेट समथिंग. If supposing Ravan Yuddha was not there, you could not have known Ramji Shaurya. So that much is required. So nipatatu arthe astu na kevalam, even if without this is not there. Ye naikena vina gunaha trinlava praya. Trinlava praya means like the smallest blade of grass. तृण लव, तृण तो ब्लेड ऑफ ग्रास, स्मॉल, ऐसी छोटी सी ब्लेड, सब बेकार सा है. इफ यू डोंट आर, इफ यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर स्टेज और अपॉर्चुनिटी और somebody to lift you, somebody should give you, कोई ऊपर देने वाला. छोटा कभी अपने आप नहीं बढ़ सकता. छोटा को कोई बड़ा चाहिए जो उसको ऊपर अपॉर्चुनिटी देता है या कुछ देता है. You need somebody bigger to give you some opportunity or some wealth, so that your goodness or your highness should be manifested in front of the world or people, etc. ऐसे ऐसे लोग हैं, कुछ नहीं उनके पास, सब कुछ है भी, still they have nothing external. आश्चर्य होता है कि बताओ इनके पास ही डजंट हैव, कुछ होता ही नहीं ऐसे. संस्कृत विद्वान पीपल आर देयर, स्कॉलर्स इन संस्कृत, दे डोंट हैव अ जॉब, दे डोंट हैव अ जॉब समटाइम्स, एंड हियर टू स्टडी लिटिल संस्कृत, वी आर थिंकिंग हाउ टू डू दैट. ऐसे ऐसे नहीं मिले उनको, उनके भाग्य में नहीं था. Some are very good singers, some are very good mouth organ player, some are very good tabla player. भगवान नहीं उनको आगे लाए, इतना नहीं था. That money was not there. ये वैल्यू हो जाती है. So I'm using the word opportunity, money, help from somebody, and encouragement from somebody. 4 things are required or synonymous here. You need encouragement. You need some push. You need some kind of, what do you say, godfather. In film they use the word, he was my godfather. In education also, if you don't have a good teacher in a certain subject and he is not forcing you,
then you also cannot understand that subject well. If a good teacher was from the beginning and he had forced, supposing mother had forced me to buy hard Bhagavad Gita, like you forced, so you would have by hearted many shlokas and many Ramayana Chopai because no pressure was there. And therefore without pressure we don't work. ऐसा ऐसा हो जाता है यहीं पे सबके लिए सब डिफरेंट हो जाते हैं. Everybody's progress is different because his starting point is different. His amount of favorable wind in different is different for everybody. किसी के लिए बहुत फेवरेबल है, किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए ऑपोजिटिव विंड है. सबका अलग अलग कर्म है, तो धन ऐसी बड़ी चीज हो जाती है. एक मनी से ऐसा हो जाता है. चलो भाई नेक्स्ट वर्स लेते हैं. प्लीज नोट दिस इज वर्ल्डली दृष्टि, बट इफ ही इज हैविंग दृष्टि ऑफ आत्म संतोष डजंट मैटर. लाइक Sudama didn't have money, but he was very happy because he didn't bother about that. When you are very pure, you don't judge yourself from the world. You judge yourself from the God. It is our egoistic person judges a lot how world sees me. And devotee judges how God sees me. He is not concerned what others say, as long as God is happy. But egoistic person is highly oversensitive to what people are thinking about me. And he is very much affected and very much hurt or very much elated if he hears something good or bad, because for him that is everything. A Bihari Mahatma is there, he is putting on lion cloth or he is putting on sometime no clothes. Naga Babas are there. They are not thinking what world will think about me. If this drishti was there, what world will think about me, then that is a very small drishti. So Jagat drishti should be graduating to Ishwar drishti. That Bhagwan kya चाह रहे हैं. ईश्वर दृष्टि शुड ग्रेजुएट टू आत्म संतोष दृष्टि, एंड आत्म संतोष दृष्टि शुड ग्रेजुएट टू आत्म दृष्टि, आत्मज्ञान दृष्टि. बिकॉज वॉट इज अफेक्टिंग यू, यू लाइक टू चेंज दैट ओनली. ये उनके लिए बता रहे हैं. एक धन के न होने पे क्या होता है. हाँ, मनी ना हो तो फिर हर जगह लोग पता नहीं कहाँ तिरस्कार कर दे किसी. बहुत सी बातें होती हैं. चलो भाई अभी आएंगे. देयर आर लॉट ऑफ वर्सेस इन दिस. तानि इंद्रियाण्य विकलानि तदेव नाम, सा बुद्धिरप्रतिता व्यचनं तदेव. अर्थोष्मणा विरहित पुरुष क्षणेन, सोऽप्यन्य एव भवतीति विचित्रमेतत्. बड़ी विचित्र बात. विचित्र मतलब समझते हो ना क्या? हाँ, मिस्टीरियस. विचित्र अलग अलग तरह की बात है. मतलब इफेक्ट इज देयर, कॉज नहीं कोई ऐसा बड़ा. वेयर यू हैव इफेक्ट बट नो कॉज. विचित्र है ये आदमी. बोलते ना विचित्र है, मतलब बिना कॉज का ही कुछ आउट पटांग काम करता है, बिना इफेक्ट सोचे उसका. कॉज इफेक्ट के रिलेशन के बिना कोई काम करता है तो बंदा बड़ा विचित्र आदमी है. वो काम करता है, उसका इफेक्ट नहीं जान रहा है कि इफेक्ट आएगा. या अच्छे सेंस में भी हो सकता है. इतना बड़ा इफेक्ट कैसे है, बड़ा विचित्र है भाई, कि उसका कॉज ही नहीं मिल रहा है. वैचित्र चित्रीकृतम, दक्षिणामूर्ति में माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम. दक्षिणामूर्ति तो वैचित्र चित्रीकृतम.
धन की बड़ी विचित्र महिमा है। क्या महिमा है? चले ना, अजीब महिमा है उसकी, क्या करें, कुछ तो है उसमें बल। तानी इंद्रियाणी, देखो क्या लिखा है, तानी अविकलानी इंद्रियाणी। सो that time he has very powerful sense organs are there. Tadeva nama, he has powerful name. Sa buddhi apratihata, he has very subtle and sharp intellect. Vachanam tadeva, and his speech is great. Vahi vani. But after supposing अथ अर्थोष्मणा विरहिता, पैसे की गर्मी चली गई। देखो कैसा कैसा शब्द लगा रहे हैं लोग, अर्थ उष्मणा विरहिता। सो इफ सपोजिंग दिस इज 40 श्लोक ना, हाँ 40 श्लोक, अर्थोष्मणा, सपोजिंग ही इज नॉट देयर हैविंग दिस पुरक्षा क्षणेन सो अपि अन्य एव भवति, ही इज नॉट डिफरेंट। ये वर्ल्डली पर्सन की तो इसकी जान चली जाए पैसा ना हो तो, इफ ही डजंट हैज रिसोर्सेज, ही डजंट हैव एनी काइंड ऑफ वो, ऐसे हाथ शिफ्ट कर सकते हैं तो जान चली जाए उसकी, तो ऐसे ऐसे बैठे बैठे। हाँ, सो तानी इंद्रियाणी, एक बोलते हैं पावर, विटामिन पी आ गया इनके पास, पावर आती है तो एकदम मिनिस्टर के चमक गलकी हो जाती है। इसको भी ले लो, मिनिस्टर को वो ले लो, बोले इनके पास विटामिन पी आ गया है आजकल, लगी हो जाती है एकदम। आदमी संसारी लोग हैं, मतलब नॉट फॉर सीकर्स, नॉट फॉर सिद्ध, उनके पास दे प्रिफर नॉट टू हैव मनी। सन्यासी को तो मनी रखना तो उसके लिए बाहर लगता है, उसको रखता ही नहीं, उसको लगता है क्या रखा जाए। लेकिन फॉर होम, बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर मनी एंड फॉर कॉन्टैक्ट, उसके बिना वो एकदम बुझ जाएगा। रिटायर होने के बाद क्या होता है, देखो लोगों को, बड़े बड़े ऑफिसर को देखो, चेहरा बदल जाता है। After once upon a time somebody was very rich and now his business has come down, पूरी हवा निकल जाती है। छुआरा बन जाए आदमी, पता ना छुआरा, ड्राई डेट्स, ऐसे 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 हो जाता है ऐसे। सो स्वप्यन्य एव भवती इति विचित्रम एतत्, क्योंकि उसमें इतना दम था उसमें, टायर में जैसे हवा ही चलेगी सारी। ये संसार वाले सही है, क्योंकि लोग पूछते ही नहीं, रिश्तेदार नहीं पूछते। यू गो टू मैरिज, दे विल कंपेयर, इनकी साड़ी ऐसी, इनका शर्ट ऐसा है, इनका ये ऐसा है, ये हस्बैंड कैसे हैं, वाइफ कैसी हैं, हस्बैंड क्या काम करते हैं। संसार बच्ची अजीब सा है। 2-4 बहनें हो, देयर आर 3-4 सिस्टर्स, तुम तो एक ही बहन हो ना, हाँ भाई है, तो 3 बहनें हो, एंड वन हैज अ वेरी रिच हस्बैंड and one does not have that rich husband. So treatment is very different. When Sati ji comes to her house, Maika, all the other sisters smiled because they know that Shivji is not come, therefore she is alone. एक उनकी मदर ही ठीक से बात करी। सो ये हाल हो जाता है लोगों का, इतने डिपेंडेंट होते हैं, दे आर सो डिपेंडेंट ऑन मनी।
अर्थोष्मणा विरहितः पुरुषः क्षणेन। ठीक है, ये होता है। फिर आदमी लोग याद करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम हम ऐसे थे वैसे थे, हम भागते थे चलते थे। चलो अगला श्लोक देखते हैं। यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। वेरी पॉपुलर वर्ड्स और अ वर्ल्डली पर्सन, जगत दृष्टि है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब, ही इज कुलीन, ही इज फ्रॉम वेरी बिग फैमिली, उसके पास तो सब तरफ है। ही इज ऑफ अ नोबल डिसेंट, ही हैज स नरः कुलीनः। चीफ गेस्ट बुलाया जाएगा उसको भाई, फ्रंट रो दिया जाएगा क्योंकि डोनेशन दिया उन्होंने। ही हैज गिवन अ हेफ्टी डोनेशन। ये हो गया, अब कुलीन हो गए भाई, तारीफ होगी उनकी। वो कुछ नहीं, बैठ के सो रहे हैं फर्स्ट लाइन में, ऐसे देख रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोले हम चल सकते हैं क्या? बोले बस स्वामी जी शुरू अभी करे नहीं, आप चले जाइएगा। यस्यास्ति वित्तम, नॉट ऑल, न सनरा कुलीन स पंडिता। फिर उनको बुलाया जाएगा, प्लीज कम इन द स्टेज एंड स्पीक। तो अपना तैयार वार किए होंगे, वो बोलना शुरू करते हैं। When person was there, he spoke the same talk, same twice. Somebody said, why? Mule, I did not know. He gave the same paper, he xeroxed it and gave it to me twice. What can I do? So, Sa Pandita, Sa Shrutavan, he is knowing scriptures also. Gunagya. Gunagya means he is the one who knows what qualities are there. Knower of virtues. सैव वक्ता, लोग बोलते हैं क्या बोला आपने, क्या बोला आपने। सच दर्शनीय, ही इज वर्थ सीइंग। अरे आगे 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 भले बुलाओ उनको, आओ आओ। जगत है सही है, आगे 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 आइए 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 आइए। कुछ लक्ष्मी जी ने जादू कर दिया। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडिता। भाई प्रारब्ध है, तभी तो उसके पास कुछ है, सब कुछ है। भगवान उसको यश भी दे देते हैं, और जगत की दृष्टि में लोग थोड़ा ऊपर देखते हैं उसको। लेकिन ध्यान देना, गेट माई पॉइंट, वैश्य तेज से क्षत्रिय तेज तेज होता है। मोर स्ट्रॉन्गर देन वैश्य तेज इज क्षत्रिय तेज, more stronger than Kshatriya Tej is Brahman Tej, and more stronger than Brahman Tej is the saint's Tej. Obama had come in India. These Tata, Birla, Ambani, Sambani, they were standing in the line to meet him. And he was meeting for 5 minutes. सबको लाइन में खड़ा करते हैं। वन इनकम टैक्स ऑफिसर, ही कैन पुट अ रेड एवरीवेयर, मिलियनर को कसीटमल बना देगा। वैश्य का तेज तो ही है उसका, लेकिन क्षत्रिय तेज उससे ज्यादा होता है। क्षत्रिय तेज में ही हैज अ पावर इन हिम। Some place somebody came to me, he said, you know, very big businessman. He said, you know, this income tax officer comes to you. You please ask him, he has put a raid and my factory is locked. If you tell, he will unlock it.
I said he comes because I don't ask him anything. Why should I say? It's your matter. I don't like to say anything to anybody. No favors I take, neither I unjustly use. And if something is right, you can put in the court. If it is wrong, God will punish you in some manner. So स ए वक्ता, ये क्षत्रिय तेज होता है. And same क्षत्रिय, same big officers in front of ब्राह्मण, एक पुजारी का भी चरण छू लेते हैं, घर के पुजारी का भी, जो पाठ करने आता है. बेचारे पाठ करेंगे. ये सब, ये जितने भी ब्राह्मण क्षत्रिय, अगर कोई सेंट हो गया, and supposing young saint is there, they will prostrate to him. ऐसा है, क्योंकि एक जगत की दृष्टि कहीं ट्रांसेंड होने लगती है. जगत दृष्टि में यही सब है, उनको कोई दिखता नहीं है, और they don't see anything. Why people want money? Because they know that, see, those who have money, they are prosperous. They can have quick car, they can go out, they can travel in a high class society. I mean, in the high class plane. What society adores, accordingly the tradition is there. Saints came because they saw that saints are adored a lot. Therefore, somebody should started thinking, let me also become like them. Sarve gunaha. It is a sarcastic remark. It is a sarcasm by Bhartrhari. कुछ है नहीं दम, पैसे में कोई दम है नहीं, क्या करेगा? उसको जगत दृष्टि चाहिए नहीं, बोले हमको पागल समझते हो, समझ लो. तो भाई, one who has left his house deliberately, he has, Gautam Buddha was already a king, Siddharth, Prince Siddharth, and he left. Why did he? Mahavir was already a king. सबके सब राजा थे, सब छोड़े. So their power is limited power. I'm not saying. जगत दृष्टिया very उपयोगी. But आत्म दृष्टिया, आत्म संतोष दृष्टिया, ईश्वर दृष्टिया, भक्ति दृष्टिया, वैराग दृष्टिया is no value for all these things. But ordinary person will see this also. People ask me, how big is your ashram? Because they want to weigh me with the length and breadth of the ashram. They are trying to put me as हम कितने बड़े हैं. तो आश्रम बड़ा होगा तो हम बड़े होंगे. और हाउ मेनी डिसाइपल यू हैव, ज्यादा होंगे तो हम बड़े. उनकी दृष्टि संसारिक है. फ्रॉम दैट दृष्टि तपोवन महाराज had no ashram, and he had no disciple. 2-3 disciples were there, 2 hardly, 2 or 3. तो बहुत छोटे हो गए फिर तो. उनकी दृष्टि यही होती है कि हाउ मेनी पीपल कम इन योर सत्संग, हाउ मेनी फॉलोअर्स आर देयर, हाउ मेनी लाइक्स आर देयर. क्या बोलते हैं उसको, हाउ मेनी व्यूज आर देयर. कितने लोग प्रवचन सुन रहे थे, ऑनलाइन में कितने लोग आते हैं, वही सबसे पहले आदमी चेक करता है. If any, then he sees how many, he doesn't see what the content is there. And one actress is going on the way of 5-minute, 10-minute clip, 1 million views. Stupid, foolish actress. उसको देखने के लिए 1 million भी हो जाएगा, 2 million हो जाएगा. ये हम थोड़ी ना डिसाइड, जगत विल डिसाइड ऑन व्हाट. दिस इज जगत दृष्टि. उसके लिए इसकी वैल्यू नहीं है ज्यादा. संत, त्याग, महात्मा, फॉर देम ऑल दिस इज वियर्ड. अधिकतर लोगों के लिए इट इज फनी और मे बी टू हाई फॉर मी टू प्रैक्टिस. देयर ग्लिटर कैचेस देम मोर. glitter, clapping, name, fame, cars, respect, nice luxurious house and cars, and well-known person in the society. That is a very big thing for ordinary person. संत ये सब बेकार की चीजें.
सब फोकट साटक है तुलसी अपनो न कछु सपनो दिन दोय, उसके लिए सब फोकट साटक. I told you, no, somebody came to Sri Oriya Baba, started talking in Sanskrit. बाबा सेठ भाई हमको तो हिंदी भी नहीं आती ठीक से. बहुत खुश हो गया, संस्कृत कहाँ से आएगी. वो सब जगह बोलना शुरू किया कि बाबा संस्कृत नहीं बोल पाए, हम तो संस्कृत में PhD किए. लोगों को बहुत बुरा लगा. दे केम बैक टू बाबा, दे से इज टॉकिंग. बाबा ने कहा इज हैप्पी, एटलीस्ट लेट हिम बी हैप्पी. खुश तो है, हमें कोई भूख नहीं है कोई हमको अच्छा समझे. संतों की एक ही भूख होती है, दे हैव ओनली वन हंगर, दैट इज ऑफ द आत्मज्ञान और प्रसन्नता ऑफ द गॉड. ईश्वर प्रसन्नता और आत्मज्ञान इज द ओनली हंगर ऑफ द सेंट. सेंट इज तृष्णा मूर्ति. He is a Trishna Murti. He is the manifestation of greed for God's love or the greed of knowledge of the self. Nothing else. You, कोई बंदो कोई निंदो कोई कैसे कहो रे, रघुनाथ साथे प्रीत बांधी होई जैसे होई रे. उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है उनकी कि हाउ गुड आर माई क्लोथ्स, हाउ गुड इज माई हेयर स्टाइल. इफ यू सी इन भागवत, जड़ भरत इज लाइंग डाउन and it is written that he has Yagyopavit. Yagyopavit's color was matching the color of the body. So dirty it became. No clothes sometime on the body. He's not, people think, उसी नाम जड़ भरत, बोले पागल है, पागल है. उनको फर्क नहीं पड़ता था. अरे पागल, ए जड़. अब he has not heard because he didn't have देहात्म भाव like we all have, अहंकार. हमको ऐसा बोल दिया, हम पागल हैं क्या, कोई हमको समझता क्या है. कल हम भी अच्छा कपड़ा पहन के जाएंगे, हम भी अच्छा से यज्ञोपवीत चमका के जाएंगे. यज्ञोपवीत तो ब्राह्मण का साइन होता है, बस साइन है, संध्या बंदन कुछ नहीं करेंगे. जस्ट टू व्हाट इज इट कॉल्ड, फ्लाउंट यज्ञोपवीत, फ्लाउंटिंग द यज्ञोपवीत, उसके लिए बस हो गया. कभी कभी शादी में दे पुट ऑन द कोट, पंडित जी विल पुट ऑन, बिकॉज शादी दिस इज रिक्वायर्ड. That samskar should have happened in 9 years. Now it is happening in 35 years. For saint doesn't matter all these things. बोले बहुत मोटे हैं. If you see Nityanand Swami, go and see the picture of Nityanand Swami of Ganeshpuri. He very big paunch is there, very dark. So you will say कैसा है face इनका, अष्टावक्र. Saint's attention is not there on all this. This is worldly people's way of thinking. So he is saying all these things in utter sarcasm. Because it is a niti of the world. World niti he is telling in Niti Shatakam. If anybody is married, getting married, so they will ask, ladka kya karta hai? What the boy does. What is the salary of the boy? This is the main question. How much he earns. So even if the boy earns, supposing, बोले लड़का अभी तो not settled yet, then why he is marrying? लड़की कैसी है देखने में, शील वाली है कि नहीं. But if लड़का is very good, he is earning 4-5 lakhs per month. Wow. After that his nature may not be good. They don't consider. He is money है तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़े खानदान का है तो बहुत अच्छा लड़का हो गया. If he is from a very big family, लड़का अच्छा ही हो गया. उसका स्वभाव भी अच्छा है, उसका शील भी अच्छा है, कैरेक्टर इज ऑल्सो गुड, एवरीथिंग इज गुड अबाउट हिम. एंड वी है नॉट अर्निंग प्रॉपरली, एवरीथिंग इज बैड. देखो उसकी नाक तो देखो, घर तो देखो इसका कैसा है. हर जगह आदमी जजमेंटल होने लगता है. ये सोसाइटी का रूल है, उसके अलग अलग मापदंड होते हैं. Earlier they used to go for arranged marriages. So the girls' side used to go to the boys' side, boys' house, and they used to see all these things. How big was the house? How big was the room? How was the cutleries? What is the standard of the cutleries? What was served in the dinner or lunch? The whole thing is revolving around money. That should not be there.
But society is like that. Or the poor girl may be middle class. This high boy supposing upper class. शादी करके दे आर सिंह बहुत अच्छी, हमारी लड़की रानी बन जाएगी. पता नहीं क्या हो, कैसा लड़का है वो. अब उसको पंडित मान लिया, श्रुतवान मान लिया, गुणज्ञ मान लिया, सब कुछ मान लिया उसको. बट सेंट्स के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. फॉर देम इट हैज नो वैल्यू. हम लोग वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग. व्हाट इज देयर वैल्यू? व्हाई इट इज देयर? I was in Ujjain and talks on Gita was there. So when ADM or SDM somebody asked a question on Gita, he said, I want the answer. I'm sending a car. You please come to my house. I said, please tell him. At that time, fire was very much. I won't come. I had one room, no table in the room, one sharpai cot was there. Not a proper bed, just a cot. No table, no chair, nothing. Maybe one stool for water and all these things. But he was very sincere, he came. I said, you also sit on my own cot. And he discussed. What was in his mind, he discussed. He was honest enough. But he thought that if I send the car, I will think that, he's big. I'm not melted so easily with these things. उनको लगा कि हम भेज देंगे तो हम बहुत फ्लैट हो जाएंगे. हमें कोई फर्क वरक नहीं पड़ता. हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार, अब का होवेंगे नर के मनसबदार. समझ गया ना? Akbar said to Tulsidas, please come and become my Navratna or something. He said, what is there? I am already Darbari of Bhagwan Ram. I have written, so I cannot be of two people. अच्छा भाई, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. So let us now see 3 श्लोक तो से. ठीक है, you see from all drishti. And the purpose of this that you rise from Jagat drishti to Ishwar drishti. What Bhagwan धर्म दृष्टि क्या है? ईश्वर दृष्टि में धर्म क्या है यहाँ पे? And from ईश्वर धर्म दृष्टि you rise to आत्म संतोष दृष्टि. हमें नहीं अच्छा लगा ये काम, बस that's only thing. I'm not satisfied. And then you start aiming higher. Anybody doesn't enjoy the bhog because he knows after bhog I'm not that happy actually. Therefore he says, is there some bigger satisfaction than what I am having? Like if you are a very rich person, you go to a sari shop and you say, this is very good sari, but is there a bigger, better sari? Well, that is costly, but don't mind. I'll give the money. Give me the best one. Or you went to the vegetable shop, some are very costly one. He said, I want that particular vegetable. He said, but that is very costly. But don't worry, I'll give that. So the sadhak's taste is very high. He wants a bigger satisfaction, bigger fulfillment, bigger area of reveling, bigger, deeper, longer, intensive, extensive area of reveling he wants. सुखम आत्यांतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति अत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः. उसको वो सब दिखता है, उसको लॉलीपॉप नहीं दिखता है. बड़ा हो गया है वो, और होना पड़ेगा बड़ा. अब जगत दृष्टि से सब इतना क्या है, जैसा है. छोटा सा घर है, छोटा सा घर है हमारा, क्या है. कम पैसा तो कम पैसा है. छोटा आश्रम, छोटा आश्रम. अच्छा है, कोई मेंटेन ही नहीं करना. बड़ा कितना बड़ा आश्रम आपका. लेट अस नाउ सी
The next verse, I hope you are not tired. 42nd verse. दौर्मन्त्र्यान् नृपतिर्विनश्यति विनश्यति यतिः संगात् सुतो लालनात् विप्रो अनध्ययनात् कुलं कुतनयात् शीलं खलोपासना ह्रीर्मद्यादनवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाश्रयान् मैत्री चाप्रणयात् समृद्धिः अनया त्यागप्रमाद्धनम्. He's saying how the money is destroyed, which is the right kind of money. But before that, he is giving few examples. Daur mantryat nrupatihi. By wrong advice, the king is destroyed. Like Ravana was given the wrong advice. Sachiv Vaidya. Huh? सचिव वैद, हाँ गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म होई बेगही नास. सो बोले क्या है सब, राम तो इज ऑर्डिनरी पर्सन, कहाँ गाजर मूली की तरह आप खा जाएंगे उसको. गलत एडवाइस दे दिया. Anybody has become matured because he was living or interacting with mature person around him. You have to know how to become mature. But somebody is immature because he is surrounded by immature people. If Mantra was mature, she would have not told this to Kikai. If Shakuni was mature, he could have saved Duryodhan. अब बताओ ये बहुत ही बिग ब्लंडर था शकुनी का लॉन्ग टर्म में कि डाइस में बुलाया जाए. दे शुड बी कॉल्ड फॉर डाइस गेम एंड एवरीथिंग शुड बी टेकन एंड द्रौपदी शुड बी डिसरोब्ड. इट वाज टेम्पररीली यू ह्यूमिलिएटेड बट यू फिनिश्ड द होल क्लैन आफ्टर 15 years. After 14 years, you got all the fruit. And very bad death and humiliation you got. Just because of this. So don't be too smart. You should see what dharma says and what policy says. What is even if there is a kast, there is a pain in the present, but don't take a wrong advice. पता नहीं who advised, Mountbatten advised about the Kashmir policy to Nehru ji. We should retreat. Already the army had gone. They stopped the army. What is now big problem, POK. They stopped the army. And it was advised by Mountbatten. Anybody else may have advised? That was the biggest blunder of Swatantra Bharat. दौर्मंत्र्यात् नृपति विनश्यति. फुल स्टॉप. है ना. देन यति ही संगात. A sannyasi is destroyed by attachment. देखो सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी. When all the kings could not break the bow of Shivji, everybody started laughing on him and they came back to their seat. गिर पड़ के आए
सो गए थे 24 बनने, दुबे हो के आए, 26 बनने गए थे। जैसे बिनु विराग सन्यासी। संग मीन्स संग विथ पीपल, प्लेस, एक्शन, ओपिनियन. डोंट बी टू अटैच टू एनी इमोशंस. आना हो आए, जाना हो जाए, रहे रहे, न रहे न रहे, बोले बोले, न बोले न बोले. अकेले रहो तो अच्छा, 1000 लोग रहे तो अच्छा. कोई आनंद दे तब अच्छा, ना दे तो अच्छा. अकेले खाना खा लो बस बैठ के. अटैच मत लो कि कुछ खिलाए ना खिलाए तो भी अच्छा, स्विगी से ऑर्डर कर लो. यति ही संगात. या किसी से कहो आरसी, इनके पास कहाँ होगा कार्ड वगैरह, तो यति ही संगात, अटैचमेंट हो जाए, इनके साथ ही रहना. अरे क्या यार, तुम अपनी ग्लोरी में रहो गोचू. When other person feels that he is desperate, the other person loses the value in your heart, in his heart, seeing your desperation. When people know that he can live without me also, I am not indispensable for him. Or he can live without money, he can live without power, he can live without good place, then the respect increases for that person. He is very independent in his joy. यति संगात. और सुन लो भाई दोनों जो, सब लोग सुन लो. सुतः लालनाथ, सुतः लालनाथ. देख रहे हो ना, सुतः लालनाथ क्या मतलब है? हाँ क्या? Too much pampering. Child is spoiled by pampering. Pampering, understand, no? Whatever he is asking, I give it. He has not heard to hear no. गलत चीज पे उसको गलत नहीं बताया, उसको गलत बताना पड़ेगा. Loving is one thing, pampering is another thing. Loving is giving him faith of God, bringing him self-control. Pampering means something he does wrong, I don't give him sufficient punishment or sufficient reprimanding, and whatever he says, I just give him because he is my single son. हमारा एक ही बच्चा है, घूम फिर के ले देकर एक ही बेचारा है. सारा उसी के लिए, किसके लिए कमाते हैं? आई एम अर्निंग फॉर हिम ओनली. उसी के लिए सब करो. आज मैगी कहा, मैगी बना देते हैं उसके लिए. कल लिजानिया बोला, लिजानिया बना दिया था. परसों उसने बोला था हमें खीरे वाला पिज्ज़ा चाहिए, तो खीरे का पिज्ज़ा बना दिया. खीरे कहाँ से पिज्ज़ा होता है, बनाया उसने. खीरे का पिज्ज़ा, अरे भाई होता है, उसने मांगा तो हमने बना दिया. इसका सुना है कहाँ से खीरा आ गया. और सुन लो, विप्रह अनध्ययनात्. स्टूडेंट्स, those who are brahmachari, swamis or brahmin, not studying every day. पान आता है ना, पान, you have to keep on rubbing it. ऐसे छुट जाएगा. घोड़े के पैर को ऐसे से करना पड़ता है रोज. Then the घोड़ा is active. श्वास को पलटना पड़ता है every day. देखते नहीं, बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कुछ ना कुछ, खोलते रहते हैं किताब. एक एक पन्ना अलग हो गया है, रामायण में कुछ किया ही नहीं लोग ने. सो विप्र अनध्ययनात् नश्यति. नश्यति will go everywhere. Vinashyati. That means he will not have the glow, inside satisfaction and outside contribution. Your inner fulfillment, inner peace comes as love and contribution to the society. So you are not, Vyashti is a load on Samashti then. It's a paralytic organ. Don't live as a paralytic organ. Upyogi, Udyogi, Sahyogi. Wherever you have, you should have 3 things. Upyogi, Udyogi, Sahyogi. I am very useful, उद्योगी इंडस्ट्रियस, एंड सहयोगी कोऑपरेटिव. सबसे झगड़ा हो जाता है इनका.
ये किसी के साथ काम नहीं कर सकते, अकेले ही कुछ करेंगे और अकेले कोई काम होता नहीं। काम का नेचर है कि आपको कई लोगों के साथ कई लोग काम करते हैं। अकेले मेडिटेशन हो सकता है, पूजा हो सकती है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, कर्म नहीं हो सकता। कर्म फॉर दैट यू नीड लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू एंड एवरीबडी विल हैव देयर ओन स्टाइल। सो विप्रः अनध्ययनात्। नेक्स्ट, कुलम कूतनयात्, फुल स्टॉप। The family is destroyed by having a bad, horrible son. Kutanayat, like Ravan destroyed Vishrava's family. Kutanay, कौरवों ने कुरुवंश को डिस्ट्रॉय कर दिया। शीलम खलो उपासनात्, the good conduct, good achar is destroyed by company of the wicked people. You start abusing because he abuses. यही स्कूल में होता है जो उसने बता रहे थे। They'll pick up the words, they'll pick up the slangs, they'll pick up the style of walking, talking, interacting. You want, where is the keyscape? ये नहीं बोलेंगे, मुंह नहीं बोलेंगे। जबकि जवान छोटी, इसको हिलाना आसान था, कंधा भारी है। ये नहीं बोलेंगे आई डोंट नो, शैल आई फाइंड इट आउट, आई डोंट नो, ऐसे बोल देंगे। विल यू हैव फूड? मुंह से बोलो, सर भारी है, जवान 2 तोले की, फ्यू ग्राम्स, ये सर तुम्हारा 10 किलो का है, हालांकि खाली है। ऐसे बच्चे जवाब देते, बिकॉज दे हैव सीन इट। In the house they stay very less time. Their cream time goes in the school. इसलिए गुरुकुल के साथ, गुरुकुल में रहते थे। They have picked up those kind of style. So शील चला गया उनके। यही अमेरिका में है, यही इंग्लैंड में। शील नहीं बच्चों में, बहुत शार्प है। They talk very nicely. They are talented. They are very smart. They can talk, they are very good debaters, they are very good mouth organ player, piano player, swimmers, martial arts. क्या है ये बोलते मार्शल आर्ट में? टाइको, हाँ, टाइकांडो टाई पहन के करते हैं। हमें पता ही नहीं सब कुछ। नोबडी आस्क, कहीं जूडो खेलने कोई पता ही नहीं कहाँ होता था ये सब। बस यही सब क्लास जाते हैं, वहाँ पे वही स्टाइल है। दे पिकअप स्लोली एंड इट बिकम्स हार्डर विद टाइम। अब बच्चे परेशान होते हैं, मेरे पेरेंट्स परेशान होते हैं, फिर वो लोग बोलते हैं ऑल द टाइम यू आर स्कोल्डिंग ओनली। उसमें पीछे पड़े रहते हैं, एवरीथिंग अबाउट मी इज रॉन्ग। ह्रीहि मदात, ह्रीहि मद्यात, शर्म चली जाती शराब पीने से। बाई ड्रिंकिंग your modesty, your grace goes away. And grace is there. Something is called grace shame, through which you feel uplifted, you feel very honored, you feel that person is under control. Anything under control is very graceful. Sun, setting of the sun. Therefore, whole ocean is graceful. Beautiful tree is graceful. But the storm is not graceful because it's out of control. The flood is not graceful because it is out of control. So when a person drinks, नशा मतलब न शाम्यति, जो शांति खत्म कर दे, शम कृतांति, शम को खत्म कर दे। सो ह्रीहि मद्यात्, क्या लोग बोलना है, क्या नहीं बोलना, what you talk, what you don't talk, what are you blabbering, which topic is there, what you are thinking. So you are now graceless, कृपाहीन। ह्रीहि मद्यात्,
I mean, you are a source of embarrassment if somebody else is there. You're not source of joy, you're a source of sorrow, and you don't know what they will think. Anavekshanadapi krishi. Agriculture is destroyed by not seeing it regularly. Huh? They leave it, and supposing any animal can destroy it, or rat can destroy that. Sneha pravashrayanat. Pravasashrayan. The love is destroyed by being too far away, living too far away. आउट ऑफ टच हो गए. पहले बड़ा था बचपन में, बिकॉज वी आर टुगेदर, देयरफॉर वी लव दोज पीपल, दोज बॉयज, दोज गर्ल्स. बट नाउ आई डोंट नो वेयर दे आर, because they are out of touch. Therefore, I don't know where they are. So, therefore, we have lost that love. Therefore, you should be in touch with somebody. If you have guru, saints, you should try to be in touch so that the tree of love should get water. Otherwise, you'll start forgetting. भूल जाओगे. There are so many things going on that you'll easily forget him. अच्छा. Maitri cha apranayat. The friendship is destroyed by not loving the person, by not sharing his sorrows. If somebody's sorrow is not shared and joy is not shared, then slowly that friendship dries up. And please note, it has to be from both the sides. One-sided, you cannot have these relations. If you want to be in contact with me and I don't want, then you cannot be in contact. If you want to love and I don't want, then you cannot love. It has to be from both the sides. Both should understand each other, what is required here. If teacher doesn't teach, the students cannot love. And if student doesn't obey, then teacher cannot love. वो फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि वो ओबीडियंट है ही नहीं, पागल आदमी है ये, सुनता ही नहीं. सो मैत्री च अप्रणयात, समृद्धि अनयात. Prosperity is destroyed by wrong policies of the government. Wrong policies are there. And last, for which all these things are said, त्याग प्रमादात धनम. त्याग प्रमादात. So त्याग प्रमादात means because of inadvertence of using the money in a wrong manner. So pramadat means carelessness. And त्याग प्रमादात, extravagant is there. बहुत खर्चा कर दिया, बहुत उड़ा दिया पैसा. Not thinking कितना देना चाहिए, क्या देना चाहिए. क्या देना चाहिए? If you have lot of money, please give donation and earn punya, go to Swarg, or get goodwill and get purity of heart. अब तुम जो है घूम रहे हो बाहर, यहाँ वहाँ जाके फूक रहे हो पैसा, खा पी रहे हो कुछ, दिन रात हो गया, थोड़ा बहुत हो गया, लेकिन अर्न पुण्य, धर्म का सबसे बड़ा उपयोग धर्म बनाने में होता है. And this is what is said in the next verse. The biggest use of dhan is dharma, is in dharma. जितने भी धर्म होते हैं सब धन से ही होते हैं. You say Birla temple, you say JK temple. All the temples and all the ashram have been built not by government but by the people who had money, who had resources. They could have invested the money and earned the blessings of all and melt the heart of the God and please the God and try to mitigate the sins that I committed. Or I could have purified the heart and gone to the saints. That is the biggest benefit of having a dhan. But you spoiled it because you thought I should get it, so you have lost the very big opportunity. And what good work has to happen, God will find somebody, some magnanimous person anyway to go get that money. But you lost the opportunity.
हम दे के कोई एहसान नहीं करते हैं, लेने वाला ज़्यादा एहसान करता है. He would have got from some other source, but he took from you. Hari Om Tat Sat. We'll see it tomorrow. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om.